welcome to all here in the session of mathematics. गत एपिसोड मानकरे आमे टेंजेंट नॉर्मल रो कांसेप्ट एवं तार किछि प्रॉब्लम मध्य करि सारछु. आज एपिसोड रे आमे सेही टेंजेंट नॉर्मल रो किछि 4 मार्क्स क्वेश्चन एवं 6 मार्क्स दैट वन इज लॉन्ग क्वेश्चन किछि कांसेप्ट क्लियर करी कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन गुड को विस्तृत भाव में कर दबा. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पुणी रिपीट करछि चैप्टर को जीवा पूर्वरु किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन करिया पूर्वरु जे if y is equal to fx is the equation of the curve, then first you have to find dy by dx, that is the slope of the tangent at the point xy. xy जदि देइछि तले xy पुट करी कि slope of the tangent बाहर कर दबार अछि. तापर equation of the tangent के बारे ना y minus y1 and x1 at the point of contact देइथिबो. so y minus y1 is equal to m टा होची slope of the tangent, that is dy by dx at the point x1 y1 बाहर कर सारथिबो. so m whole into x minus x1. using this formula you can find the equation of the tangent. सिमती equation of the normal कोन हबो? equation of the normal खाली dy by dx जगह रे तार slope change हो कारण normal आउ ये कोन tangent they are perpendicular to each other. यदि tangent रो slope dy by dx ताले normal रो slope केते हबो -1 by dy by dx. काहे कि दीटा लाइन जेतेबेले कोन होइता दीटा लाइन जेतेबेले परपेंडिकुलर हुए ताले कोन हुए तांको भितर स्लोप रो रिलेशन कोन m1 * m2 = -1 नै कोन. सो देयरफॉर गोटे स्लोप जणा थिले dy by dx आ गोटे स्लोप केम जणा पडिबो -1 by dy by dx. सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. गोटे लोकोस थिबा प्रॉब्लम आजि करिवा. लोकोस ता तुम माने को बहुत डिफिकल्ट लागुची तो से लोकोस थिबा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ता आजि बढ़िया से कांसेप्ट क्लियर करी की करिवा. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. दैट इज if the tangents are drawn from the origin to the curve y is equal to sin x, then so that locus of the points of contact is x square minus y square is equal to x square y square. ता माने आउ थरे पढो क्वेश्चन टाकू. if the tangents are drawn from the origin to the curve y is equal to sin x, ता माने कर्व रो इक्वेशन दे देछि y is equal to sin x. ओके, तापर then so that locus of the points of contact is x square minus y square is equal to x square y square. ए locus वाट ता आसी गला लको तुम मानको डिफिकल्ट लागुची. किछि locus वाट रे नाही. locus is the set of all the points which are satisfying certain given condition. आउ सेही given condition रु हम satisfy करी कि जो इक्वेशन ता डिराइव करिया that is the locus or equation of the locus. तेणु डरिवार नहीं, आराम रे इजीली देखो केमती होची. ताले फर्स्ट y is equal to sin x, that is the equation of the curve. So start. Given equation of the curve is y is equal to how much? Sin x. So slope of the tangent is equal to dy by dx, that is dy by dx is equal to cos x. You can write here slope of the tangent, slope of the tangent at which point? Let that point be xy. Let you see the rough sketch. एटा गोटे देखो रफ स्केच sin x रो कर्व ओरिजिन थारु सी कहै छै ओरिजिन थारु टाणिबो टेंजेंट. त माने ओरिजिन थारु टाणले कोन हबो? ताले ओरिजिन थारु टाणले ओरिजिन रो कोऑर्डिनेट केते 0 0 एंड सपोज p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट हला x y. ओके, ताले xy हला p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट, ओरिजिन रो कोऑर्डिनेट हला 0 0. so slope of the tangent at xy cos x. but you see but the tangent is drawn from the origin 0 0 to the curve at p xy. ताले 0 0 ठरु xy पर्यंत tangent रो कले tangent ऊपर दीटा पॉइंट मिली गला. ताले y2 minus y1. so slope देखियो slope of the tangent is equal to y2 minus y1, that is y minus 0 by x minus 0. कते हला y by x. ताले एटा हला स्लोप ऑफ द टेंजेंट. क्वेश्चन अनुसार गिवन कंडीशन अनुसार किंतु आम अनुसार स्लोप केते अछि y cos x. so therefore that implies y by x is equal to केते हे गला cos x. तो y by x is equal to cos x, y is equal to sin x. ए दिटा नै कि but we have sin square x plus cos square x is equal to 1 for all points of x belongs to R, isn't it? ताले एठी मेंशन कर परियो sin square x plus cos square x एटा गोटे कंडीशन एकु ए sin x एवं
ये जो y by x is equal to cos x, that is the slope of the tangent, एमान समस्ते मानिबे. So therefore sin square x plus cos square x is equal to 1. এই कंडीशन नै कि गोटे इक्वेशन डिराइव करिया. से इक्वेशन टा कोन, sin square x माने केते, sin x माने y रो स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस cos square x माने cos x केते हमर बाहरछि, y स्क्वायर by x स्क्वायर is equal to 1. एडी एलसीएम नै जिवो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एडी एलसीएम नै कि सेपटे मल्टीप्लाई कर दियो x स्क्वायर. दैट मीन्स केते हे गेला, x स्क्वायर y स्क्वायर is equal to x स्क्वायर minus y स्क्वायर. एटा जोटा भाला एटा इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम द एनी कंडीशन व्हिच आर सैटिस्फाइंग द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट. हला. So therefore we have already found this one, x square y square is equal to x square minus y square. This equation derived from certain condition. So this is nothing but the locus of the point of contact. लिखि पारियो locus of the points of contact. So just we have proved. Okay, in this way you can find the locus of tangent drawn from the origin to any point of the curve. Okay, so make it a note. Now we'll go to the next problem. Now you read the question carefully. Find the equation of the normal to the curve x is equal to 3 cos theta minus cos cube theta and y is equal to 3 sin theta minus sin cube theta at theta is equal to pi by 4. That means you have to find the equation of the normal at the point theta is equal to pi by 4. X is equal to given in the form of theta and y is equal to given in the form of theta. ताले एटा पर बाहर करिया अछि. तो given equation of the curve x is equal to 3 cos cube theta. ताले देखो given equation of the curve is x is equal to 3 cos theta minus cos cube theta. ताले dx by d theta बाहर कर देलो minus 3 sin theta cos theta derivative minus 3 sin theta minus cos cube theta derivative something to by n. ताले 3 आसिला आगो को cos square theta into cos theta derivative केते minus sin theta. तो minus 3 sin theta कॉमन नबो, minus 3 sin theta कॉमन नेले रहिला हमर केते, एड रहिला 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta केते पुनी sin square theta. तो minus 3 sin theta sin square theta केते गेला minus 3 sin cube theta. सेमती y is equal to 3 sin theta minus sin cube theta given. So d by d theta केतेला 3 cos theta minus 3 into sin cube theta रो डेरिवेटिव केते 3 into sin square theta into sin theta डेरिवेटिव केते cos theta. So therefore एटू कॉमन कोन जीवो 3 cos theta कॉमन गले 1 minus sin square theta पुनी cos square theta 3 cos cube theta. एटाला dy by d theta dx by d theta just we have found. So we have our aim to find what is that, dy by dx. ताले dy by dx is nothing but the dy by d theta whole divided by dx by d theta. That is nothing but the dy by d theta 3 cos cube theta, 3 cos cube theta by minus 3 sin cube theta. 3 cancel, cos cube by sin cube है cot cube minus cot cube theta. So you have to find the slope of the tangent at the point दे दीजिए at the point pi by 4. theta is equal to कितने, theta is equal to pi by 4. So minus cot cube pi by 4, cot pi by 4 is 1 रो cube कितने 1, that is nothing but the minus 1 which is the slope of the tangent, slope of the tangent. लिखि दबो हमर बार करिया अछि slope of the normal. So slope of the normal slope of the normal is equal to minus 1 by dy by dx. ता माने minus 1 by minus 1 that is equal to 1. ताले slope of the normal बाहरी गला. हमें पॉइंट बाहर करिया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 जगह रे x केते y केते 8, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. that implies x is equal to 3 cos pi by 4. 3 cos pi by 4 केते लिखि दिया नले cos pi by 4 minus cos cube pi by 4. This is nothing but the 3 into 1 by root 2 that is 3 by root 2 minus cos cube pi by 4 माने 1 by root 2 whole cube that is 1 by 2 root 2. LCM गले 2 root 2, 2 3 is 6 minus 1 that is 5 by 2 root 2.
Similarly y is equal to सेमती 3 पाई बाय 4 दैट इज 3 sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 केते हबो 1/√2 ताले 3/√2 डायरेक्ट लिख दउची तुमे लिखियो माइनस sin पाई बाय 4 रो क्यूब दैट इज 1/2√2 सेठी सेमती एलसीएम करले 2 3 जे 6 -1 5/2√2 ताले हमर केते मिलला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख परियो सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is 5/2√2 x रो वैल्यू y रो वैल्यू 5/2√2 एटा x1 y1 पाई गलो ताले नॉर्मल रो इक्वेशन पचारची नॉर्मल रो इक्वेशन बात करे केते y minus y1 is equal to -1/dx that is slope of the normal 1 into x minus x1 y1 already we have found okay ताले वर्तमान बात करिया now we can find the equation of the normal so equation of the normal is formula जानिछो y minus y1 आगे लिख देबा y minus y1 is equal to -1/dx that is the slope of the normal whole into x minus x1 अच्छा y minus y1 होची 5/2√2 is equal to -1/dx that is केते हिची 1 into x minus x1 हला 5/2√2 तो -5/2√2 -5/2√2 cancel ताले y is equal to x that is the equation of the normal required equation of the normal this is the required equation of the normal that's your answer he is asking equation of the normal ताले प्रथमे कोन बाहर कलो dx by d theta तापर dy by d theta तापर dy by dx at the point theta is equal to pi by 4 बाहर कर दलो तापर at the point theta is equal to pi by 4 what is the value of x what is the value of y दिटा को फाइंड कर दलो तापर x रो वैल्यू y रो वैल्यू that is the point of contact x1 y1 पाई गलो x1 y1 पाइला परे तापर पाई गलो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y minus y1 is equal to -1/dx whole into x minus x1 the equation of the normal y is equal to x so in this way you can find the equation of the normal so make it a note now we'll take another last problem now we'll take the last question eta ठीक lengthy होबो किंतु very important बहुत easy भी अछि आराम रे बुझी परिबो मु तो बुझेई दउची first of all question पढिबा carefully question पढो समझते given if cos alpha plus y sin alpha is equal to p is a tangent to the curve x by a whole to by n by n minus 1 plus y by b whole to by n by n minus 1 is equal to 1 then you have to prove then show that a cos alpha whole to by n plus b sin alpha whole to by n is equal to p to the power n तो ये जो क्वेश्चन देखिलो एतिरे कोन देइछि ना इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑलरेडी गिवन तापरे टेंजेंट रो गोटे इक्वेशन देइ देइछि तो इक्वेशन ऑफ द कर्व देइथिले टेंजेंट रो इक्वेशन केन बारे ना फर्स्ट dy by dx फाइंड करियो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एनी पॉइंट नै जिवो xy तो xy नै की इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बाहर कर दो y minus y1 is equal to dy by dx whole into x minus x1 हमर इक्वेशन आम अनुसार बाहर कर दो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ता अनुसार इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देइछि ताले गोटिए लाइन जेते बेला हबो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट सेही टेंजेंट रो इक्वेशन आमे बाहर करछु आ बही रे गोटे देइछि दैट मींस दीटा लाइन गोटे लाइन जेते बेला हिजो वन इज लेइंग ओवर अनदर हमर फार्मूला कोन अछि 10 क्लास रो बेसिक नॉलेज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 तो दीटा इक्वेशन रो a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाहर करी कि जदी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 निया जाय सेही कंडीशन रो जो कंडीशन प्रूफ देइछि सेटा बाहर जो बस एति के सिंपल कांसेप्ट रे हम जिबा ओके ताल कोन करिया फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं कर तापर तार जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देइछि से दीटा को कोन करदा कोइंसाइड करदा माने गोटिए टेंजेंट रो इक्वेशन कर दवा ओके एति बाहर करिया सो लेट्स स्टार्ट given at xy okay you see given equation of the curve is x by a whole to by n by n minus 1 plus y by b whole to by n by n minus 1 is equal to 1 equation number 1 दे दबो ई जो कांस्टेंट को बाहर को नहीं आसो a2 पर एटा बाहर को नहीं आसले a2 पर -n by n minus 1 x2 by n by n minus 1
এটা b to power minus n by n minus 1 y to power n by n minus 1 is equal to 1 तापर differentiating with respect to x derivative नहीं जावा we have to find the dA by dx ना so therefore এটা constant outside the derivative it is x to power n by n minus 1 derivative x to power n formula रे n whole into x to power n minus 1 so n by n minus 1 into x to power n by n minus 1 minus 1 केता ला x to power 1 by n minus 1 सेमती एटा b to power as it is रखो एटा चली आसला n by n minus 1 y to power एटा minus 1 that means y to power 1 by n minus 1 into dA by dx 1 derivative केते 0 so एठी रखि दबा हमर dA by dx फाइंड करिया अछि so एटा लेफ्ट हैंड साइड रे रखो एटा राइट हैंड साइड को नेले minus a to the power minus n by n minus 1 n by n minus 1 x to power 1 by n minus 1 तो एथरु dA by dx बाहर कर दलो एटा ने डिवाइड करले माइनस पावर अछि माने एटा ऊपर चल जिवो एटा तळक पळे आसियो माइनस b by a whole to power n by n minus 1 एटा x by y whole to power केते हला 1 by n minus 1 एटा कोन हला स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट xy नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at the point xy is given by y minus एटी कैपिटल y नवा अच्छा x1 y1 होची स्मॉल x स्मॉल y ताले y minus y1 टाला स्मॉल y is equal to dA by dx माने एटा टोटल लिखवा स्लोप that is minus b by a whole to the power n by n minus 1 x by y whole to the power 1 by n minus 1 whole into x capital X इक्वेशन नो जो xy सेटा लिखियो कैपिटल X कैपिटल y आ x1 y1 हला स्मॉल x स्मॉल y तो x minus x1 हला स्मॉल x ओके एटा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को टिके सिंपलीफाई कर दवा तो एटा डिवाइड कोन करिया b to power n by n minus 1 एटी y to power 1 by n minus 1 एटा एपटु गानी डिवाइड करी गोटे सिंपलेस्ट फॉर्म टा लिखवा सो राइट y is equal to 1 तल देखिलो तो वर्तमान y whole into y to power एटा नै आसीबा y और b को डिवाइड कर दबा पड़े ताले b to power n by n minus 1 तळक पळे आसिला y to power 1 by n minus 1 ऊपर ताले y to power 1 by n minus 1 b to power n by n minus 1 मल्टीप्लाई कर दल y रे सेमती स्मॉल y रे भी मल्टीप्लाई कर दल सेपट सेमती कैपिटल x रे कोन मल्टीप्लाई करे x to power 1 by n minus 1 by a to power n by n minus 1 ओके बुझी पाइलो एटा कैपिटल x रे मल्टीप्लाई करलो माइनस माइनस हे गला माइनस माइनस कोन हे गला प्लस x into x to power 1 by n minus 1 by a to power n by n minus 1 अच्छा ए दिटा मल्टीप्लाई करले y to power 1 अछि ताले y to power 1 plus 1 by n minus 1 कारण बेस सेम अछि एक्सपोनेंट दिटा ऐड हे जिवो ताले 1 plus 1 by n minus 1 केते हबो n by n minus 1 ताले एटा y to power n by n minus 1 b to power n by n minus 1 ता माने कोन y by b whole to power n by n minus 1 ठीक राइट हैंड साइड रे भी सेम अछि x to power 1 एटी x to power 1 by n minus 1 ताले 1 plus 1 by n minus 1 कोले केते हबो x to power n by n minus 1 a to power n by n minus 1 ताकू केम लिख परिबा x by a whole to power n by n minus 1 एपटे जोटा अछि एटा को राइट हैंड साइड को ट्रांसफर कर दियो सो y by b whole to power n by n minus 1 एटा इक्वेशन रे प्रथम इक्वेशन एटा केते देछि 1 देछि सो दिस वन इज इक्वल टू 1 तो एटा देखो तो वर्तमान कैपिटल y और कैपिटल x को लेफ्ट हैंड साइड को नै आसिल कैपिटल x x to power यार कोएफिशिएंट कैपिटल x रो कोएफिशिएंट रख दो कैपिटल y रो कोएफिशिएंट रख दो x to power 1 by n minus 1 divided by a to power n by n minus 1 plus capital Y whole into y to power 1 by n minus 1 b by n minus 1 is equal to 1 1 टाको एपटो नै आसले -1 is equal to 0 that means एटा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आम अनुसार एटा भरला किंतु क्वेश्चन रे आ गोटे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देछि सेटा गोटे इक्वेशन गोटे टेंजेंट रो इक्वेशन सो कोइंसाइड करी गले ताले कोन होबो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 तो एथिरु a1 b1 c1 के एटा हला a1 x to power 1 by n minus 1 a to power n by n minus 1 हला a1 एटा हला b1 c1 हला -1 सेमती सो b sin alpha whole to power n is equal to p to the power n okay proved you see but given that the equation of the tangent is equal to how much x cos alpha plus y sin alpha is equal to how much p that means x cos alpha y sin alpha minus p is equal to 0 this one equation number 3 that one equation number 2 so from 2 and 3 these two equation
are represent the same tangent. Same tangent means these two equation are, that means one tangent is laying over another. That means what? One line is laying over another माने कौन? माने two lines are coincide. तार condition कौन? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. This one is the basic knowledge. So therefore where A1 is equal to how much? X to the power equation 1 रू जानी थी वो x to power 1 by n minus 1 by a to power n by n minus 1 b1 केते y to power 1 by n minus 1 by b to power n by n minus 1 सेटा y रो कोएफिशिएंट एटा x रो कोएफिशिएंट और c1 टा होची कांस्टेंट दैट इज -1 एठी सेमती a2 b2 c2 पाई गलो a2 cos alpha b2 sin alpha और c2 हला केते -p तो पुट कर देलो खाली पुट कर देले तले एटा चली आसिला 1 by p एठू x to power 1 by n minus 1 फाइंड करिया एटा कोन कर दबो एठी मल्टीप्लाई कर दबो 1 रे मल्टीप्लाई करला a to power n by n minus 1 cos alpha by p रहिला हां तापरे एटा कोन करे x to power n by n minus 1 बोथ साइड रो पावर n नै जिबा पावर n नै गले एटा x to power n by n minus 1 एटा a to power n square हे जिवो n square by n minus 1 cos to power alpha cos alpha whole to power n हे जिवो आ p to power n हे जिवो ओके ताले एटा भी सेमती y to power 1 by n minus 1 होची केते ना एटा भी कि एठी मल्टीप्लाई करलो b to power n by n minus 1 sin alpha by p एटी तापरे यार पावर भी n नहीं जिबा एपटर पावर भी n नवा रेजिंग द पावर n बोथ द साइड्स सो y to n by n minus 1 केते गेला b to power यार पावर n हेले n into n n square by n minus 1 sin alpha to power n p to power n सब गुडा n पावर हे गेला अच्छा क्वेश्चन हमर कोन देतला x to power n by n minus 1 by a to power n by n minus 1 तमने x by a whole to power n by n minus 1 तो सेही फॉर्मेट आनिबा ताले a to power n by n minus 1 डिवाइड कर दबो कारण सेटार प्लस कर देले 1 हे जिवो ताले x by x to the power n by n minus 1 divided by a to power n by n minus 1 ताले बोथ रे डिवाइड कर दबो a to power n by n minus 1 डिवाइड कर दियो एपट भी राइट हैंड साइड रे अच्छा a to power n square by n minus 1 a to power n by n minus 1 ए दिटा माइनस करले मन मन लसाउ नियो n minus 1 लसाउ n square minus n नु n कॉमन ले n minus 1 तले n minus 1 कटि गला खाली रहला a to power n तनु a to power n cos alpha to power n p to power n त ए दिटा को सिंपलीफाई कर देले a to power n मिलियो सेमती ए दिटा को सिंपलीफाई एपटे सेमती y to power n by n minus 1 डिवाइडेड बाय b to power n by n minus 1 डिवाइड कर दो डिवाइड कर ले b to power n square by n minus 1 by b to power n by n minus 1 ए दिटा करले कोन हो b to power n square by n minus 1 minus n by n minus 1 लसाउ कत हला त माने n square by n minus 1 minus n by n minus 1 कले कते होची देखलो लसाउ कते होची n minus 1 n square minus n कते हेगला n कॉमन ले n minus 1 by n minus 1 कैंसिल हेगला कोन रहला n रहलानी ताले एई जिंसटा इठी करा हिची b to power n square by n minus 1 by b to power n by n minus 1 माइनस करले एबो b to power n खाली n रहिबो खाली n रहिला एटी भी ठीक से या करा हिची a to power n करा हिची ओके बुझी पाइलो ताले एटा हला b to power n sin alpha to power n p to power n एठी हला a to power n cos alpha to power n p to power n ताले ए दिटा प्लस कर दवा this one plus this one प्लस कर देला हमर क्वेश्चन ए देतला सेटा इज इक्वल टू 1 तो ये दिटा x by a whole to power n by n minus 1 पावर दिटा सेम अछि माने x by a whole to power n by n minus 1 y by b whole to power n by n minus 1 नाउ लिखि दबो ताले ये दिटा को राइट हैंड साइड ऐड कर दियो a to power n cos alpha to power n by p to power n प्लस एटा केते b to power n sin alpha to power n by p to power n p to power n लॉस हो नले p to power n टा अच्छा एटा इज इक्वल टू केते देतला क्वेश्चन रे इज इक्वल टू 1 एटा लिखि दो फ्रॉम 1 विल गेट दिस वन इक्वेशन 1 रो हमर ए दिटा समेशन इज इक्वल टू 1 देथिला तो एटा इज इक्वल टू p to power n लॉस हो नै कि p to power n सेपटे मल्टीप्लाई कर दलो ताले a cos alpha whole to power n b sin alpha whole to power n इज इक्वल टू p to power n कारण एटा a to power n cos alpha to power n माने कोन a cos alpha whole to power n एटा अब b sin alpha whole to power n इज इक्वल टू p to power n LCM नै कि p to power n मल्टीप्लाई कर दलो ओके दैट्स ऑल एति कि प्रूफ सरला ताले बुझी पाइलो कोन कर हला जदी ए क्वेश्चन रो आंसर बुझिबारे किछि प्रॉब्लम हुए एगुडी को सब लॉन्ग क्वेश्चन तेणु ये लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक भल से तुम कर तुम बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर जदि किसी प्रोब्लेम हुए ताले मते मेसेज कर तुम डाउट क्लियर करदेवी ओके थैंक यू।